Hello students, welcome to our fusion classes. तो आज क्लास में हम डिस्कशन करना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रो फर्स्ट करना डेफिनेशन तो लिख दे। क्या कान डिस्कशन करना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। These are the imaginary straight or chord path along which a unit positive charge tends to move in an electric field. तो काना कहला देखो ता डेफिनेशन ता काना कहूचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड path along which a unit positive charge tends to move in an electric field. तो फर्स्ट कथा काना एटा होचे इमेजिनरी लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स माने काना एटा इमेजिनरी है। सेकंड ता काना पार्ट बाय पार्ट करिया हम बुझी देखो। फर्स्ट ता इंपोर्टेंट होचे जे इमेजिनरी है। सेकंड हला एटा स्ट्रेट और कर्व पाथ हला। तो एटा पाथ है आइदर स्ट्रेट हो पारे और कर्व हो पारे। तीन नंबर कहार पाथ है गुटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रो पाथ है जेते करी किसे काना गुटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे मूव करसी। तो गुटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे गुटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जेन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ टेबल मूव करसी सेटा के कहसे काना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इन जनरल एटा काना एटा गुटे पाथ है आइदर स्ट्रेट हो पारे और कर्व हो पारे। कहार पाथ गुटे पॉजिटिव चार्ज रो जहां देकरी से गुटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे मूव करसी। तो नेक्स्ट काना इता डायरेक्शन ता केनता हवा। तो डायरेक्शन काना इसे पॉजिटिव रो नेगेटिव आके ऐसे। तो जब दुईटा चार्ज अछन गुटे पॉजिटिव चार्ज आ गुटे नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रो डायरेक्शन ता केना हवा पॉजिटिव चार्ज रो नेगेटिव चार्ज आड़े मूव करबो हैला। तो तापर हम नेक्स्ट काय पढबो एते रिप्रेजेंटेशन माने डिफरेंट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ता केनता करी हमें रिप्रेजेंट करबा हैला। तो देखो नेक्स्ट काय पढबो रिप्रेजेंटेशन। तो इधर फर्स्ट केस ता काना जेते बेले q टा ग्रेटर देन 0 होता हैला। तो काना कहना q टा ग्रेटर देन 0 माने जे हम चार्ज सा नेमा सेटा काना ग्रेटर देन 0 होबा। ग्रेटर देन 0 मींस इटा काना ते काना हेतबा पॉजिटिव चार्ज हेतबा हैला। तो देखो सब इनो काना करनो उडे चार्ज से न्यू प्लस q काना प्लस q नो। तो इता रखु काना इनो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इता डायरेक्शन केनता हबा सेटा हमको देखनो। तो हमें एबे टिके आगु के काम कहली कि तुमर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ता काना हेसी पॉजिटिव रो नेगेटिव आड़ के ता डायरेक्शन ता हेसी। तो देखो एटा है पॉजिटिव चार्ज तो बाहर इनो केनो माने तुमर काना नेगेटिव चार्ज माने आछी। तो पॉजिटिव रो नेगेटिव आड़ के माने इता भितरु बाहर के डायरेक्शन हबा। तो एटा काना सबु आउटवर्ड डायरेक्शन रहबा हैला। तो डायरेक्शन ना काना हैला रेडियली आउटवर्ड हैला। तो इनो टर्म ता असला रेडियली आगे केमते लिखना इता क्या हम गुटे सर्कल हिसाब में रिप्रेजेंट कर पारबा नै। तो एटा देखो ता रेडियस कहि पारबा एटा के तो हेते ले लिखा है रेडियली आउटवर्ड। तो तुमर पॉजिटिव चार्ज जदि होचे जदि q टा ग्रेटर देन 0 होचे तो तुमर जन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टा काना हेबा रेडियली आउटवर्ड सेकंड केस q लेस देन 0 हला q रो वैल्यू माने जन चार्ज टा हमें नमा तार वैल्यू टा काना आसबा लेस देन 0 माने 0 रो छोट बेले काना एटा नेगेटिव चार्ज हला तेना हम काना करमा ते नेगेटिव चार्ज टा नमा एबे केनता हबा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करा हला ते मन डायरेक्शन केना रहबा हम काना करसु पॉजिटिव रो नेगेटिव आड के हबा बोलसु यार पॉजिटिव थिबा नेगेटिव आड के हबा पॉजिटिव रो नेगेटिव हिसे डायरेक्शन काना हला रेडियली काना हला पॉजिटिव चार्ज रो भीतर के हिचे रेडियली इनवर्ड तो फर्स्ट देखो जदि हम पॉजिटिव चार्ज होछु काना होचे रेडियली आउटवर्ड जदि नेगेटिव चार्ज होछु रेडियली इनवर्ड होचे हैला नेक्स्ट देखो तुम्हारे 3 नंबर केस पढ़वा 3 नंबर काना लाइट चार्ज हैला तो लाइट चार्ज माने काना दुईटा सेम चार्ज नमा हैला दुईटा भी सेम चार्ज नमा ई केस रे काना हेबा सपोज दुईटा चार्ज q1 टा नेला आउटे q2 नेला आउ दुई अंकर मैग्नीट्यूड टा काना सेम आसबा हैला तो से केस रे काना हेबा देखो फर्स्ट कथा दुईटा के लाइट चार्ज नो जो हम चार्ज प्रॉपर्टीज रा पढि सारि छु कि दुईटा लाइट चार्ज काना करछु रिपेल करछु हैला तो हम इनो काना करना दुईटा चार्ज नमा q1 q1 आउट हैला प्लस q2 आउ इने हम मेंशन करछु देखो q1 रो मैग्नीट्यूड जहा अछि q2 रो मैग्नीट्यूड भी ताहा माने दुई चार्ज सेम मैग्नीट्यूड अछि हैला तो ई केस रे काना देखो तुमर आमे फर्स्ट कथा तो आमे काना कहछु पॉजिटिव रो नेगेटिव हिस्से बोली करे तो ई चार्ज काना होला नेगेटिव चार्ज खुजी खुजी एतकी दूर आसला हैला नेगेटिव चार्ज के नहीं पाए से काना होला 5 के डिवाइड कला हैला तो ई भी हमता पॉजिटिव चार्ज ए नेगेटिव खुजी खुजी आसला नहीं पाला तापर ता डिवाइड वाला तो ई मान पर डायरेक्शन देबा एने नहीं इनो के हम सेंस कर पाबो आसला नहीं पाला नेगेटिव चार्ज फिर डिवाइड होला ई भी एकदम खुजी आसला नहीं मिलना था कि भी नेगेटिव चार्ज तो से भी आते वाला तो इना देखा हम काना करछु सेम चार्ज का सब वाला रिप्रेजेंटेशन करछु इना देखो रिप्रेजेंटेशन भी हमता हेछि कि नहीं ई रिपेयर करछि कि नहीं दुईटा कहंदा आउ भी हम ड्रा कर पारमा नेक्स्ट हला माको डायरेक्शन काना बा पॉजिटिव रो नेगेटिव के राशि तो पॉजिटिव रो ले राशि काना से रेडियली आउटवर्ड से और डायरेक्शन काना बा रेडियली आउटवर्ड तो सब एरो काढे छे बाहर के जाय छे तो रेडियली आउटवर्ड रहता हैला तो देखो इनो गुटे पॉइंट अछि सपोज p हैला तो ई पॉइंट के हम काना कहमा p पॉइंट के न्यूट्रल पॉइंट हैला तो ई सन तुमर माने डिपार्टमेंट रे तो डेविएट ही छे इनो गुटे पॉइंट अछि p साहबे को हबा काना न्यूट्रल पॉइंट आ ई p पॉइंट रे तुमर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते आसबा 0 कैसे इटे लाइन से काना तुमर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंट करछन ई p पॉइंट केन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाय छै केनता भी करे नाइ तो इनो तुमर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ता केते आसबा 0 आसबा हैला तो एटा थिला तुमर केन केस जेतबे लाइट चार्ज थिबा आ दुई अंकर मैग्नीट्यूड ता सेम आसबा आउ के केस देखो
इनो काण हेबा तुमर q1 टा ग्रेटर देन q2 थिबा हला तो q1 टा ग्रेटर अछि q2 टा लेस अछि माने दुईटा हम पॉजिटिव चार्ज काट माने सेम चार्ज न बाकी काण हेबा गुटे तेर मैग्नीट्यूड अधिका थिबा गुटे तेर मैग्नीट्यूड कम थिबा तो सपोज q1 पॉजिटिव चार्ज नेला q2 भी गुटे पॉजिटिव चार्ज नेला हला तो इनो काण हेबा देखो q1 रो मैग्नीट्यूड अधिका अछि माने q1 कैपिटल अछि तो ये अधिका दूर जीवा आर से डेविएट होगा हला बाकी ये स्मॉल लगता है तो ये कम माने डिस्टेंस से करे डेविएट जीवा इना में तो बनता है हवा मन डायरेक्शन पर काण बा पॉजिटिव चार्ज माने रेडियली आउटवर्ड तेला तुम्हार से पॉइंट थिबा न्यूट्रल पॉइंट डेल्टा p त p टा केना अछि माने के कान पॉजिटिव चार्ज अछि q1 चार्ज छु जहार कि तुम्हार कान अछि मैग्नीट्यूड टा अधिक अछि और कहार पाखे अछि q2 पाखे जहार कि मैग्नीट्यूड टा कम अछि तो ई केस रे जब हम 3 नंबर केस पढ़ला q1 और q2 रो मैग्नीट्यूड जते वाला सेम थिबा इना तुम्हार p पॉइंट टा क्या थिबा लाइज ऑन center of q1 and q2 बाकी एवरेज में केस पढ़ला q1 ग्रेटर देन q2 तो ई केस में p पॉइंट केना लाइज करबा p lies nearer to q2 q2 वाला केटा जेंटा smaller in charge माने जहां चार्ज जहां मैग्नीट्यूड टा कम थिबा से तार पाखे रहबा p पॉइंट टा तो एटा तुम कान थिला हमर लाइक चार्ज जते वाला थिला वन लाइक चार्ज लागि पड़बा नेक्स्ट वन लाइक चार्ज लागि वन लाइक चार्ज माने काना आ गुटे पॉजिटिव नंबर आउटे नेगेटिव नंबर तो सपोज प्लस q आउटे हला माइनस q एडे के काना कोइ मानबा हमें डायपोल बोली भी कर पारबो हला तो दुईटा चार्ज नेमा जहां कि माने मैग्नीट्यूड टा सेम थिबा ऑपोजिट दुई पर चार्ज देबो तो गुटे चार्ज नेमा पॉजिटिव चार्ज आ गुटे नेमा नेगेटिव चार्ज तो हमें काना जानि छु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काना आसी पॉजिटिव रो नेगेटिव आडके जासी तो डायरेक्शन काना होबा पॉजिटिव रो नेगेटिव ना ड्रॉ कर परबा डायरेक्शन केना रहबा पॉजिटिव रो नेगेटिव ना यदि दुईटा ऑनलाइन चार्ज नो छो तो जरा डायरेक्शन केनो के केबा पॉजिटिव रो नेगेटिव केनो आउटे केस काना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जदि थिबा इना हमर फील्ड लाइंस केनता आसबा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने परियाड़ अछि पॉजिटिव चार्ज याड हैला नेगेटिव चार्ज तो हमें कान लेन छु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कान से पॉजिटिव रो नेगेटिव आड के रहबा ए माने काना असले समझते इधर देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माने काना इलेक्ट्रिक फील्ड टा जेन भी तुम पॉइंट रे कैलकुलेट करबो काना आसबा सेम आसबा तो हमर ए जेन फील्ड लाइंस हमें नेचुरल माने काना हेबे समझते पैरेलल हेबे ना पैरेलल हेबे और डिस्टेंस टा सेम आसबा माने इक्विडिस्टेंस और पैरेलल रहबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एटा थला हम डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माने डिफरेंट केस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टा केनता हेबा कट डायरेक्शन हमें केनता करे जानि पारमा तो आज हम पढ़ना काना डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना काना हम प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक
field lines। आज क्लास एमती था